Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In the first video, I explained the concept of circular flow of income and how does it works in the two-sector economy. Whereas in this video, I'm going to tell you how does circular flow of income works in the four-sector economy. Now, when we talk about circular flow of income in four-sector economy, the four main sectors are your household sector, firm, government and foreign sector. Household, firm, government और फॉरेन सेक्टर ये चार मेन सेक्टर होते हैं. मैंने पहले भी कहा था फाइनेंशियल मार्केट जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स आते हैं वो हर सेक्टर में कांस्टेंट रहते हैं. नाउ लेट्स मूव how does circular flow of income works in the four sector economy. Now, the household sector that consists of society and families provide factor services to the firms, and with these factor services only, the firms are able to produce goods and services. This thing is not mentioned in the chart and you do not need to mention in the chart, you just need to write it when you explain the flow chart or when you explain this diagram. In the diagram, you need to explain or you need to mention that the firms provide factor payment to the household for the factor services and the household gives consumption expenditure to the firms for the goods and services. Here you do not need to show the real flow, that is flowing of factor services or goods and services. You can mention it in your answer, but money flow, that is flowing of factor payment from firms to household and consumption expenditure from household to the firms need to be mentioned in your diagram. Now, this was the transaction between household and firms. Now coming to the government. Both your household and firms give taxes to the government. The household gives GST or your private income taxes, whereas firms give corporate tax and other types of taxes to the government. We can say that household and firm both give taxes to the government. In return, the government provides subsidies to the firm. Subsidies are kind of financial help that the government gives to the firms for their upliftment, for the development. Whereas the government provides transfer payment to the household sector. Now, what is transfer payment? Transfer payment include your old age pension schemes, educational schemes, various types of financial schemes through which household sector can be benefited. So we can say that the government provides subsidies in return of tax to the firms and provide transfer payment in return of tax to the household sector. Now coming to the fourth sector of this economy, that is your foreign sector. When we talk about foreign sector, it is understood that we are talking about the international trade, that is export and import of goods, services, payment receipts, payment given and received to all the sectors. Now, the household sector, when import from foreign sector, they give foreign payment to the foreign sector. What? Import payment. Import payment to the foreign sector, and in return the foreign sector provide export receipt to the household when foreign sector export goods from the household. In other words, you can understand that when household sector import anything from foreign sector, the household need to give import payment, whereas when foreign sector need to have something from household, that is when we families or society export anything, we get export receipt from the foreign sector. This same situation happens with the firms. The firms when need to import any type of raw material or any type of goods from the foreign sector, they give import payment, and when the foreign sector wants to take goods or need to take services from the firms, or we can say that when firms export goods, then they get export receipt from the foreign sector. Now, coming to savings and borrowings, the three sectors, that is your household, government and firm, give or deposit
their money in form of savings to the financial market, and financial market provide borrowings to the firms, to the household, to the government when any of these sectors are in need of financial aid. Let us revise once again. अब हाउसहोल्ड और फर्म में वैसे ही ट्रांजैक्शन होगा जैसे पहले होता था. हाउसहोल्ड फैक्टर सर्विसेज देता है, रिटर्न में फर्म्स उसको गुड्स और सर्विसेज बना के देता है. ये दो जो आते हैं रियल फ्लो मेंशन नहीं है डायग्राम में, लेकिन अपने आंसर्स में इसको एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. डायग्राम में हमने सिर्फ मनी फ्लो दिखाया है जिसमें हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देता है फर्म्स को गुड्स और सर्विसेज के बदले, और फर्म्स देता है फैक्टर पेमेंट फैक्टर सर्विसेज के बदले. अब हाउसहोल्ड और फर्म दोनों गवर्नमेंट को क्या देते हैं? टैक्सेस. हाउसहोल्ड भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, फर्म्स भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है. रिटर्न में गवर्नमेंट फर्म को सब्सिडीज प्रोवाइड करती है और हाउसहोल्ड को ट्रांसफर पेमेंट प्रोवाइड करती है. ट्रांसफर पेमेंट में आता है आपका ओल्ड एज पेंशन, एजुकेशन स्कीम्स एक्सेट्रा. अब आते हैं फॉरेन सेक्टर में. फॉरेन सेक्टर में दोनों फर्म्स और हाउसहोल्ड दोनों काम करते हैं. हाउसहोल्ड जब कोई चीज़ इंपोर्ट करता है फॉरेन सेक्टर से, मतलब कोई चीज़ मंगवाता है दूसरे देशों से, तब हाउसहोल्ड देता है इंपोर्ट पेमेंट. लेकिन जब हाउसहोल्ड या सोसाइटी एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब हम कुछ बेचते हैं फॉरेन सेक्टर को, तब हमें मिलता है एक्सपोर्ट रिसिप्ट. सेम चीज़ होती है फर्म्स के साथ. जब फर्म्स कोई चीज़ खरीदती है फॉरेन सेक्टर से या इंटरनेशनल मार्केट से, तब वो देता है इंपोर्ट पेमेंट. लेकिन जब फर्म या इंडस्ट्री कोई चीज़ बेचती है दूसरे देशों को या इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसको मिलता है एक्सपोर्ट रिसिप्ट. अपार्ट फ्रॉम दिस, फाइनेंशियल मार्केट में फर्म्स, गवर्नमेंट और हाउसहोल्ड अपने डिपॉजिट रखते हैं सेविंग्स के फॉर्म में, और जब इन तीनों सेक्टर में से किसी भी एक सेक्टर को या तीनों सेक्टर को फाइनेंशियल एड या हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तब फाइनेंशियल मार्केट इन तीनों को बोरोइंग्स देता है. ये था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द 4 सेक्टर इकोनॉमी. अब सर्कुलर फ्लो इन 3 सेक्टर इकोनॉमी में फॉरेन सेक्टर हट जाता है. तब रहता है सिर्फ हाउसहोल्ड सेक्टर, फर्म और गवर्नमेंट. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 3 सेक्टर में आता है, हाउसहोल्ड, फर्म और गवर्नमेंट. उसमें फॉरेन सेक्टर का ट्रांजैक्शन हट जाता है. इन अ नटशेल वी कैन से दैट इन सर्कुलर फ्लो ऑफ income in 3 sector or 4 sector economy, it has a very wide scope, wide transaction in order to achieve various types of social objectives and economic objectives. Now, all those who have not subscribed my channel, please subscribe my channel in order to get good and educational stuff related to the field of commerce and various other aspects that are related to economy. Thank you very much.